very much also for coming in. Vidyagati, keep chanting Hare Krishna for a few minutes, then I will pin Champaklata Mataji in the next few minutes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, 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 Krishna, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Ram 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 Ram. Hare Thank you Krishna. very, very much. Hare Krishna Vidyagati Prabhu. And thank you very much for Lal Krishna Prabhu and Champaklata Mataji for taking us to your beautiful altar, amazing Gauranitai deities. Please tell me the names of the deities, please. Nitai Gaur Sundar, I think. Dayal Nitai Gaura Hari. Dayal Nitai Gaura Hari Ki Jai. And thank you very much, Lal Krishna Prabhu and Champaklata Mataji, for the beautiful altar, beautiful dress. And thank you very much. Let's get on. Starting off today's session, a Gaur Purnima festival Praram today with a kirtan from the residence of Chitta Hari Prabhu and Damodar Mataji, sung by Sri Vaishnavi and accompanied by Raghav. So we will first have a kirtan, and after that, we will have His Holiness Bhanu Swami Maharaj address us today. So then the further programs, we shall announce that later. So today, Vaishnavi is going to take us through a beautiful song, and I'm going to just get to show that song to you all in the next few minutes. Okay, just give me a second. Okay, thank you, Chitta Hari Prabhu, and thank you, Vaishnavi, for this, and Lal Krishna Prabhu and Champaklata Mataji. Thank you again for beautiful darshans, and I would request you to also start off with the Aarti as Vaishnavi starts to sing. So, Vaishnavi, over to you. Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat Pranam. Prabhuji, am I audible? You are very well audible. Make sure that you have enabled original sound. Yes, Prabhuji, I have. Okay, Prabhuji, we'll start. Hare Krishna. Dole dole Maharaja Hari Gunagar Hari Gunagar Dole dole Gaura
Hari Guna Gaaya. Dule dule Gauraja, Hari Guna Gaaya. Dule dule Gauraja, Hari Guna Gaaya. Dule dule Maharaja, Hari Guna Gaaya. Ashiya Vrindavane, Ashiya Vrindavane, Nache Gaura, Nache Gaura, Nache Gaura, Nache Gaura. Dule dule Gauraja, Hari Guna Gaaya. Dule dule Gauraja, Hari Guna Gaaya. Vrindavane Tarunata, Preme Koyani Katha. 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 Nikunjera Pagi Boli, Nikunjera Pagi Boli, Nikunjera Pagi Boli, Nikunjera Pagi Boli. Hari Naam Sona, Hari Naam Sona. Dule dule Gauraja, Hari Guna Gaaya. Dule dule Gauraja, Hari Guna Gaaya. Gaur bole Hari, Shari bole Hari Hari. Gaur bole Hari Hari, Shari bole Hari Hari. Gaur bole Hari Hari, Shari bole Hari Hari. Gaur bole Hari Hari, Shari bole Hari Hari. Mukhe mukhe sukha shari, Mukhe mukhe sukha shari, Mukhe mukhe sukha shari, Mukhe mukhe sukha shari. Hari Naam Gaaya, Hari Naam Gaaya. Dule dule Gauraja, Hari Guna Gaaya. Dule dule Gauraja, Hari Guna Gaaya. Hari Naam Mata Hoy,
I'll read out the translation now. The moonlight Lord Gaurachanda arrives in Vrindavan while dancing, swaying to and fro, and singing the glories of Lord Hari. The creepers adorning the trees of Vrindavan are overwhelmed with ecstatic love, and they are speaking about the glories of Lord Hari. Flocks of birds who live in the groves are singing the name of Lord Hari. Lord Gaura says, Hari Hari, a female parrot responds, Hari Hari, and then all male and female parrots start singing a loud chorus of the name of Hari. Becoming intoxicated by the holy name, the deer come forward from out of the love of the forest. The peacocks and the peahens are dancing and frolicking in ecstatic love. Lord Hari is in his heart, Lord Hari is in his meditation, and he always chants the name of Hari with his voice. Gaurachanda is intoxicated by ecstatic mellows and rolls around on the ground while singing and dancing Harinam. Arriving on the bank of the Yamuna river, he dances wildly while chanting Hari Hari. Mother Yamuna becomes so ecstatic that she arises and becomes forward to wash Lord Garanga's feet. Jai Gauranitai. Hare Krishna. Can you continue with Kirtan for another 5-7 minutes, please? Yes. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Gaura Premanandi Hari Hari Bol. Pranam Sankirtan ki Jai. Shurupad ki Jai. Hare Krishna Mama ki Jai. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you very much for the wonderful kirtan. Sita Hari Prabhu, Mataji, Vaishnavi, and Raghav. Thank you all very much for the wonderful kirtan. I am going to request Hari Gopal Prabhu to come forward to introduce His Holiness Bhanu Swami Maharaj. I'm still searching to see whether Maharaj is already connected on. And before that, I would like to specially thank Champaklata Devidasi Mataji, Lal Krishna Prabhu, and their amazing altar, such a beautiful tour that you gave us of the beautiful deities and the deities, Shri Shri Dayal Gaura Hari deities. Thank you very much for the beautiful deities and a very nice arti that you showed us, your Laddu Gopal, your beautiful altar with His Holiness Bhakti Branga Govinda Swami Maharaj also on the altar. And thank you all very much. And thank you, Mataji. You have amazing deities. Thank you very much for beautiful darshan that starts off with our Gaura Purnima Mahotsava. We are actually having with us today His Holiness Bhanu Swami Maharaj. And while I am trying to connect on with Maharaj, I request His Grace Hari Gopal Prabhu, if you're there, to connect up
and give an introduction. And Nand Kishore Prabhu, I would request you to even translate the introduction that is being given by Hari Gopal Prabhu. Thank you. Hari Gopal Prabhu, over to you. Hare Krishna, Shivala Prabhu, Dhanavad Pranam. Thank you for the, I hope my audio is okay. Yes, we are able to hear you. Okay, thank you, Prabhu. So, Pause for translation by Nand Kishore, even for the. Hare Yeah. Krishna. Yes. sure, Prabhu. Jai Shri Shri Nitai Gaur Sundar ki Jai, Shri Gaur Purnima Mahotsav ki Jai. So it's such an honor to be glorifying a wonderful Vaishnava like His Holiness Bhanu Swami Maharaj. तो ये बहुत सम्मान की बात है कि मैं इतने महान वैष्णव श्री श्री भानु स्वामी महाराज जी का गुणगान कर पा रहा हूँ. His Holiness Bhanu Swami Maharaj is a very senior disciple of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, the founder Acharya of ISKCON. श्री श्री भानु स्वामी महाराज जी बहुत ही वरिष्ठ शिष्य हैं शिला प्रभुपाद जी के, जो हरे कृष्णा आंदोलन के संस्थापक आचार्य हैं. He was, even though his parents are from Japan, he lived most part of his life in Canada. And then when he was very, very young, he met with Srila Prabhupada and joined the ISKCON movement. तो हालांकि श्री भानु स्वामी महाराज जी के माता पिता जो हैं वो जापान से हैं, परंतु महाराज का अधिक समय कनाडा में बीता. और जब उनकी बहुत कम उम्र थी, वे शिला प्रभुपाद जी से मिले और ये आंदोलन से जुड़ गए. Srila Prabhupada very early recognized how His Holiness Bhanu Swami Maharaj was so expert in Sanskrit, especially his pronunciation, which he appreciated at many times. तो श्री भानु स्वामी महाराज जी पहले ही इस बात को समझ गए कि शिला प्रभुपाद अपने संस्कृत उच्चारण में कितने दक्ष हैं, और इस बात की सराहना उन्होंने पहले ही की. Of course, His Holiness Bhanu Swami Maharaj is expert in several areas, being appreciated directly by Srila Prabhupada, especially an expert in deity worship, and he's also a very expert cook. तो भानु स्वामी महाराज जी बहुत सारी चीजों में दक्ष हैं, जो शिला प्रभुपाद जी ने पहले ही देखा कि वे विग्रह की पूजा में और रसोई पकाने में दोनों में बहुत दक्ष हैं. I'm hearing a little bit of a noise coming from another mic. Can you please kindly mute? So His Holiness Bhanu Swami Maharaj spent a significant amount of time in Sridham Mayapur. Also, he was preaching a little bit in Bangladesh. I believe he was also one of the key in the installation of the Sri Pundarik Dham deities there and worshipping there in Bangladesh. तो श्री भानु स्वामी महाराज जी ने काफी समय श्रीधाम मायापुर में बिताया, काफी समय बांग्लादेश में भी बिताया, और मुझे लगता है कि पुंडरिक धाम में जो विग्रह हैं उनको स्थापित करने में भी उनका योगदान है. Somewhere around the mid 80s, he moved to the southern part of India, making Chennai his base. तो लगभग 1980 के बीच में वे दक्षिण भारत में उन्होंने अपना निवास बनाया चेन्नई में. So, all of you, might have heard about the most wonderful manifestation of the Sri Radha Krishna Lalita Vishaka temple in Chennai, which was the brainchild and the wonderful manifestation that His Holiness Bhanu Swami Maharaj brought about. तो श्री श्री भानु स्वामी महाराज जी ने, आप लोगों ने सुना होगा कि जो बहुत सुंदर विग्रह है श्री श्री राधा कृष्ण का चेन्नई में, उनको वहां लाने में भी महाराज का योगदान रहा है. So for over 3 decades, he has been in Chennai preaching in South India and all over the world, specifically around India, Sridham Mayapur. He travels to the Middle East then and there, travels very extensively to Malaysia and Australia. तो लगभग 3 दशक सप्ताह से महाराज चेन्नई में प्रचार करते हैं, मायापुर में जाते हैं, मध्यपूरी देशों में जाते हैं और मलेशिया में भी जाते हैं और वहां प्रचार करते हैं. And I think Maharaj is already here. Yes, Hari Gopal Prabhu, please continue and complete. I just wanted to, yes, His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. I just wanted to significantly mention about the books that he has been translating. His Holiness Bhanu Swami Maharaj has translated
many of the Gaudiya Vaishnavacharya books from Bengali Sanskrit into English. तो मैं अब हमारे बीच हिज होलीनेस भानु स्वामी महाराज जी आ चुके हैं। श्री श्री भानु स्वामी महाराज जी की जय। तो अब प्रभु बता रहे हैं कि काफी पुस्तकें हैं जिनका महाराज ने अनुवाद किया है। काफी गौड़ीय वैष्णव पुस्तकें हैं जिनका महाराज ने बंगाली संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। The volume of the books that have been given to us by the Gaudiya Vaishnava Acharya is so voluminous that some of them don't even exist to be found in their original copies. तो हमें जो वैष्णव पुस्तकें हमारे आचार्यों ने दी हैं, उनमें से काफी पुस्तकें हमें उनकी मूल पुस्तकें नहीं मिल सकती अभी। And to find these books and actually translate them to be easily accessible today by the entire world in English language is a very rare feat. और इन पुस्तकों को खोजना और फिर उनका अनुवाद करना कि वो आज हमारे बीच अंग्रेजी में उपस्थित हो सकें, ये बहुत ही एक दुर्लभ कार्य है। Under the direction of His Divine Grace, Srila Prabhupada, Maharaj has translated, and today we have close to about 108 plus books that have been translated from Bengali and Sanskrit languages into into English. तो श्रीला प्रभुपाद जी के निर्देशन पे महाराज ने काफी पुस्तकों का अनुवाद किया है और लगभग 108 से अधिक पुस्तकें हैं जिनका बंगाली और संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है। So many of these books are available in hard copies, which you can procure in many temples around in India and some other parts of the world too. But more importantly, these books have also been available, especially considering the current pandemic situation, to easily access through digital form. तो इनमें से काफी पुस्तकें हैं वो आपको मंदिरों में व्यक्तिगत रूप में मिलेंगी, भारत के मंदिरों में और अन्य मंदिरों में। और अभी जो महामारी का समय चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए ये पुस्तकें आपको डिजिटल रूप में भी अभी मिल सकती हैं। So regardless of which part of the world that you are in, all you need to do is to go to Amazon, Amazon.com or Amazon.ae or IN or whichever part of the world that you are in, you can digitally download these books for you to read them. तो आप दुनिया के किसी भी भाग में क्यों ना हो, आपको बस इतना करना है, आप Amazon.com या Amazon.ae, Amazon.in जो भी स्थान पर आप हैं वहाँ Amazon के साइट पर जाइए और डिजिटल तरीके से इन पुस्तकों को आप अपने पास उतार सकते हैं अपने पढ़ने के लिए। And how do you find these books? Just go to Amazon. Whichever location you are, and then search for Bhanu Swami, and you will have the complete list of books listed there, and you can pick the book. और इन पुस्तकों को आप कैसे खोजेंगे? आप बस जिस स्थान पे है वहाँ के Amazon के वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पर आप खोजिए भानु स्वामी, और महाराज द्वारा लिखी हुई जो सारी पुस्तकें हैं वो वहाँ आपको मिलेंगी। And just lastly, to conclude, and of course, I can go on and on about the glories and the various preaching services that Maharaj has been doing for the Tivo VP, the many temples around, the deity worship, and so on and so forth. Very importantly, that apart from writing these books, he is also giving lectures every day in the morning, Srimad Bhagavatam lectures. Of course, now that he's back in Chennai and he's been giving these lectures, they are being telecast live on YouTube. So you could also see that you could follow these books from the lectures that he is currently giving. तो महाराज के विषय में मैं कहता ही जा सकता हूँ, उनके महिमा के विषय में, उनके गुणगान के लिए, परंतु समाप्त करने के लिए महाराज ने बहुत सारी सेवाएं की हैं, प्रचार की सेवाएं हैं। जो हमारा TOVP मंदिर आ रहा है श्रीधाम मायापुर में, जो अद्भुत मंदिर, उसके लिए बहुत सेवाएं की हैं। विग्रह पूजा के विषय में सेवाएं की हैं और इतने हमारे लिए उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। और इसके साथ साथ वो प्रतिदिन सुबह को श्रीमद् भागवतम का कथा भी देते हैं। और अभी महाराज वापस चेन्नई में हैं और ये आप कथाएं YouTube में जाकर सुन सकते हैं। Not only on YouTube, these lectures are also being live telecasted on Facebook. तो केवल YouTube में ही नहीं, महाराज के Facebook पेज में भी आप इन्हें सुन सकते हैं। So with that, thank you for the opportunity, Shivala Prabhu, to glorify Maharaj. And without much ado, I'll pass it back to you, Prabhu. Thank you very much, Harigopal Prabhu. Maharaj, I had initially muted you. You can unmute yourself. And Maharaj, we are very fortunate to have you here in Damodar Desh many times.
and personally, our whole family, including Mahamani Krishna Prabhu, have had the fortune of being there with you, hearing you, though it is never sufficient. We are very, very fortunate and thankful for you to come along to join us today. We've just started off with our Gaura Purnima Mahotsava, starting with your lecture today. And later we have a couple of other sessions. This evening we have Amarendra Prabhu giving a lecture. Tomorrow 12 hours of Kirtan and Adivas. And after tomorrow, being a working day, we still have Gaura Purnima. This is also an occasion where we have lost His Grace Krishna Kirtan Prabhu. So the Kirtans tomorrow will be dedicated as prayer for Krishna Kirtan Prabhu of Bangladesh. And also we here in the UAE have had the bad fortune of losing the brother and the deputy ruler of Dubai, Sheikh Hamdan Al Maktoum bin Rashid Al Maktoum. And so in prayers also for the royal family here. Thank you very much, Maharaj, for being here with us today. Looking forward to your katha. And I would request you to pause for translations in Hindi. And at the end, you can take some question answers. And I'm sure there'll be quite a lot according to your convenience. We can stretch it a little if required. Thank you very much, Maharaj. His Honorable Bhanu Swami Maharaja ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Over to you, Maharaj. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasad Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Nirvachesha Shunyavadi Pastatya Chatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Baby Gadadhar Swati Gaura Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So the Lord Chaitanya is a very special avatar of the Supreme Lord. तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के बहुत ही विशेष अवतार हैं. Sometimes we speak of Krishna as an avatar, but actually he's avatari, he's the source of all the avatars. कभी-कभी हम कृष्ण को संबोधित करते हैं उन्हें अवतार कह के, परंतु वो सभी अवतार के स्रोत हैं, वे अवतारी हैं. So Chaitanya Mahaprabhu is also the equivalent of Krishna. He's also avatari. तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बिल्कुल समान हैं, इसलिए वे भी अवतारी ही हैं. So Lord Chaitanya appeared in Navadvip or Mayapur, West Bengal, over 500 years ago. तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर थे नवद्वीप मायापुर में, पश्चिम बंगाल में 500 वर्ष पहले. That means he appeared in Kali Yuga. इसका अर्थ ये हुआ वे प्रकट हुए कलयुग में. Krishna appeared at the end of Dwapar Yuga. कृष्ण का आविर्भाव हुआ था द्वापर युग के अंत में. After Krishna disappeared, then Kali Yuga began. तो कृष्ण के चले जाने के बाद कलयुग की शुरुआत हुई. So because he appears in Kali Yuga and he teaches the Yuga Dharma, we call Chaitanya Mahaprabhu the Yuga Avatar. तो क्योंकि वे कलयुग में आते हैं और वो युग धर्म को सिखाते हैं, इसलिए हम चैतन्य महाप्रभु को युग अवतार कहते हैं. Each yuga has a special dharma. हर युग का एक विशेष धर्म है. In Satya Yuga, the people were very qualified. So the dharma for the people that time was meditation, jnana. तो जो कलयुग है, जो सतयुग है, उस समय जो व्यक्ति थे वो योग्य थे, इसलिए उस समय धर्म था ध्यान. Treta Yuga, the people were still very advanced and quite wealthy, so the dharma was homa, sacrifices. तो जो त्रेता युग है, उस समय भी जो व्यक्ति थे वे काफी उन्नत थे, धनी थे, और इसलिए उस समय का जो धर्म था वो था होम, यज्ञ करना. In the Dwapar Yuga, the method of worship was paricharya or archana, deity worship. और द्वापर युग में जो मार्ग था, जो तरीका था उपासना का, वो था विग्रह की पूजा. In Kali Yuga, the main worship is Nam Sankirtan. और कलयुग में जो मुख्य उपासना है वो है नाम संकीर्तन. So 1,000 times in the day of Brahma,
we get these cycles of Satya, Treta, Dwapara, Kali, 1000 times. तो ब्रह्मा जी के एक दिन में हमें 1000 बार ये 4 युग एक साथ मिलते हैं, जो है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। So to divide that up, like we divide the day into hours, Brahma's daytime is divided into 14 sections. तो अगर हम इसका विभाजन करना चाहें, जैसे कि हम एक दिन का विभाजन करते हैं घंटों में, तो एक दिन का 14 विभाजन होते हैं। So each period is called a manvantara. So there are 14 manvantaras in one day of Brahma. तो इस एक विभाजन को कहा जाता है मनवंतर, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर है। And in each manvantara there are 71 yuga cycles of Satya, Treta, Dwapara, 71 times. और एक मनवंत्र में ये जो 4 युग हैं, ये जो पूरे 4 युग जिसे हम महायुग कहते हैं, ये 71 बार आते हैं। In the 7th manvantara of Brahma's day, in the 28th cycle of yugas, Krishna appears in Dwapara Yuga. तो ब्रह्मा के 7वें मनवंतर में जो 28वां चक्र है 4 युगों का, उसमें कृष्णा प्रकट होते हैं द्वापर युग के अंत में। And in the Kali Yuga, after Krishna appears, we get Chaitanya Mahaprabhu appearing. और जो कलयुग है जिसमें कृष्णा आते हैं द्वापर युग में, उस द्वापर युग के बाद जो कलयुग है उसमें प्रकट होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। So in other words, Krishna and Chaitanya Mahaprabhu only appear once in a day of Brahma. तो दूसरे शब्दों में कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार प्रकट होते हैं। And they come together one after the other. और वे एक साथ आते हैं एक दूसरे के बाद। So there's a good reason for this. तो ऐसा होने के लिए बहुत ही एक अच्छा कारण है। Chaitanya Mahaprabhu presents Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु सबके समक्ष भेंट करते हैं कृष्ण को। So Krishna is the highest form of God. तो कृष्ण जो है वो भगवान का सबसे सर्वोच्च रूप है। So a lower form of God cannot present Krishna. तो अगर भगवान का कोई निचला रूप है, वो कृष्ण को प्रस्तुत नहीं कर सकता। Just as we see, Vishnu and Lakshmi do not enter into Vrindavan enjoying Krishna's pastimes there. जैसे हम देखते हैं कि विष्णु और लक्ष्मी देवी जी वृंदावन में नहीं प्रकट करते और वहां की लीलाओं में भाग नहीं लेते। Nrsimhadev does not come into Vrindavan. नरसिम्हदेव वृंदावन में नहीं आते। Ramchandra does not come into Vrindavan. रामचंद्र भी वृंदावन में नहीं आते। So in this way, in order to reveal Krishna, we need someone the same status as. तो इसीलिए कृष्णा को सबके बीच में स्पष्ट करने के लिए हमें कृष्ण के बराबर ही स्थिति का कोई चाहिए। Because Krishna is the highest form, he's also the rarest form. क्योंकि कृष्ण सबसे उच्चतम रूप है, वे सबसे दुर्लभ रूप भी हैं। That which is the most valuable and treasured, etc., usually is not easy to obtain. तो जो कुछ बहुत मूल्यवान है वो इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। If you want to get a very valuable diamond, it is not easily available. तो अगर आप एक बहुत मूल्यवान हीरा प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आसानी से उपलब्ध नहीं है। You need lots of money, but everybody does not have lots of money. आपको बहुत सारा धन चाहिए और सभी के पास बहुत सारा धन नहीं होता। Furthermore, they do not put all these big expensive diamonds in the shop windows. और उससे आगे जो इतने बहुत कीमती हीरे हैं वो लोग अपनी दुकानों के खिड़कियों पे नहीं लगाते। They're not on public display. वो आम जनता के बीच में प्रस्तुत नहीं किए जाते। If you want to see the diamond, then you have to get some special pass. अगर आपको इस प्रकार के हीरों को देखना है तो आपको एक विशेष पास प्राप्त करनी होगी।
And if you want to obtain a diamond, then you got to pay a lot of money. और अगर आपको इस प्रकार के हीरे को प्राप्त करना है तो बहुत सारा धन देना होगा. So because Krishna is the highest, therefore very difficult to obtain. तो क्योंकि कृष्ण सबसे उच्चतम है, बहुत मुश्किल है उन्हें प्राप्त करना. However, if we realize Krishna, we get the highest bliss. और इसके साथ साथ ही अगर हम कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं तो हमें सबसे उच्चतम आनंद प्राप्त होगा. Because Krishna is all merciful, then he should give out that bliss to everybody. तो क्योंकि कृष्ण परम दयालु हैं, वे इस आनंद को उनको ये आनंद को सबको बांटना चाहिए. But still, because very rare, how can he give it out to everybody? परंतु इसके साथ साथ क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है, तो कैसे वे इसे सबके बीच बांटे. So Chaitanya Mahaprabhu has a very special purpose in his appearance. तो चैतन्य महाप्रभु उन्हें बहुत ही एक विशेष उद्देश्य है उनके प्राकट्य में. Because he's non-different from Krishna, he can give Krishna to everyone. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्णा से अभिन्न है, इसलिए वो सभी को कृष्णा दे सकते हैं. So Krishna appeared, but he didn't give himself to everybody. तो कृष्णा का आविर्भाव हुआ, परंतु कृष्णा अपने आप को सभी को नहीं सौंपते. But his merciful aspect is Chaitanya Mahaprabhu. परंतु उनका दयालु पहलू है श्री चैतन्य महाप्रभु. So sometimes we describe Krishna as being very madhurya, very sweet. कभी-कभी हम कृष्ण का वर्णन करते हैं कि वो बहुत माधुर्य हैं, वो बहुत मीठे हैं. So then because Chaitanya Mahaprabhu was non-different from Krishna, then he should also be very sweet. और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अभिन्न हैं, वे भी बहुत मीठे होने चाहिए. But as I mentioned, he's a little different because he is a very merciful form of Krishna. परंतु जैसे मैंने पहले उल्लेख किया, वो कृष्ण से थोड़े अलग हैं. वो कृष्ण के बहुत ही कृपालु रूप हैं. So we call his form not Madhurya but Audharya. इसलिए हम उनके रूप को माधुर्य नहीं कहते हैं, औदार्य कहते हैं. This means he's a form of great mercy. इसका मतलब है वे महान कृपा के रूप हैं. So he is the form that's able to give out Krishna to everyone. Very merciful. तो ये वे रूप हैं जो सबको आसानी से कृष्ण प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वे बहुत कृपालु हैं. Of course, Krishna is very rare. He's Swayam Bhagavan, so he's the topmost form of the Lord. तो बेशक ही कृष्ण जो है वो बहुत दुर्लभ हैं, वो स्वयं भगवान हैं, इसलिए वो सबसे उच्चतम रूप हैं भगवान के. He is higher than the devatas and higher than the Vishnu forms, higher than the avatar forms. तो वो हरे कृष्ण, तो वो देवताओं से ऊंचे हैं, वो विष्णु से भी ऊंचे हैं, हरे कृष्ण, और वो अन्य अवतारों से भी ऊंचे हैं. So one of the ways in which he is higher is that he displays various intimate relationships with his devotees. तो एक तरीके से जिससे वो और सब अवतारों से ऊंचे हैं, वो इसलिए है क्योंकि वे अपने भक्तों के साथ बहुत ही अंतरंग घनिष्ठ संबंध का प्रदर्शन करते हैं. So if you hear of Krishna's pastimes in Vrindavan in the 10th canto, then you see there are various types of devotees. तो अगर आप कृष्ण की लीलाओं के विषय में सुनेंगे 10वें स्कंद में, तो आप ये देख पाए वृंदावन में, तो आप ये देख पाएंगे कि विभिन्न प्रकार के भक्त हैं. Some act as servants. कोई उनकी दास की तरह उन कार्य करते हैं. We have many others who are actually friends. This we call Sakya Rasa. और बहुत सारे और भक्त हैं जो उनके मित्र की तरह हैं, जिन्हें हम सख्य रस कहते हैं. This is not very common. We do not see Sakya
or friendship in Vaikuntha and other with other avatars, but we see it with Krishna and Vrindavan. तो ये बहुत आम बात नहीं है। हम इस प्रकार के साख्य भक्त वैकुंठ में या और अन्य स्थानों में नहीं देख पाते दूसरे अवतारों के साथ, हम इन्हें केवल वृंदावन में देख पाते हैं। However, we have a more intense relationship, and that is called Vatsalya, parental relationship, like Mother Yasoda and Nanda Maharaj. और इसके साथ साथ हमें और भी अन्य गंभीर रिश्ते हैं, जैसे कि वात्सल्य रस, जैसे कि उनकी माता यशोदा और उनके पिता नंद महाराज। Vatsalya rasa, the devotee is superior to Krishna. Mother Yasoda is superior to Krishna, and sometimes she threatens to punish him. तो वात्सल्य में जो वात्सल्य रस है, उसमें जो भक्त होता है वो भगवान से भी श्रेष्ठ होता है। इसीलिए कभी-कभी माता यशोदा कृष्ण को धमकी देती हैं कि वे उन्हें दंडित कर देंगी। And more intense in its emotions and bliss is Krishna with the gopis. और इससे और गंभीर भावनाएं और आनंद है उस रिश्ते में जो कृष्ण और गोपियों के बीच में है। This is called Madhurya Rasa, or Ujjvala Rasa, or Shringara Rasa. इसे कहा जाता है मधुर्य रस, उज्ज्वल रस। थर्ड वन, सॉरी महाराज, आई कुड नॉट हियर। Shringara. Shringara Rasa. श्रृंगार रस। So this is the most intense of all. तो ये सबसे अधिक गंभीर है। Sometimes these rasas are compared to juices. कभी-कभी इन रसों की तुलना की जाती है जूस, जिसे भी जूस की तरह। So we have sugarcane juice, very sweet. तो हमें है गन्ने का रस जो बहुत मीठा होता है। And we have grape juice, sweeter. हमें अंगूर का रस होता है और मीठा। We have jackfruit juice, even sweeter. इसके बाद हमें कटहल का रस होता है और ज्यादा मीठा। Then we have mango juice, the sweetest of all. फिर आम का रस सबसे अधिक मीठा। So in the same way as we have these juices, we have the different rasas, and the topmost, like the mango juice, is Madhurya rasa. तो इस प्रकार जैसे ये अन्य फलों के रस हैं, इसी प्रकार भगवान के बीच भी भक्तों के साथ रस हैं, और जो सबसे उच्चतम है आम के रस की तरह, वो है माधुर्य रस। And in that Madhurya rasa, there are also various intensities, various excellences. और ये जो माधुर्य रस है, इसके अंदर भी बहुत प्रकार की तीव्रताएं हैं, बहुत प्रकार के मनोभाव हैं, महानुभाव हैं। So there are all sorts of gopis with all sorts of Madhurya rasa, but the topmost gopi is Radharani. तो इसी प्रकार से बहुत सारी गोपियां हैं इस मधुर रस के साथ, परंतु इनमें जो सबसे सर्वोच्च हैं वो है श्रीमती राधा रानी। So the relationship of Krishna with Radha is considered to be the topmost. तो सभी संबंधों में से कृष्ण का जो श्रीमती राधा रानी के साथ संबंध है, उसे सबसे सर्वोच्च माना जाता है। And in fact, Radharani is the Hladini Shakti of Krishna. और वास्तव में श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण की हल्लादिनी शक्ति हैं। Hladini means bliss. हल्लादिनी का अर्थ है आनंद। So Krishna experiences the highest bliss of all with Radha. तो कृष्ण अनुभव करते हैं सबसे सर्वोच्च आनंद का वो श्रीमती राधा रानी के साथ। So the whole spiritual world is filled with bliss. तो जो पूरा आध्यात्मिक जगत है वो आनंद के साथ भरा हुआ है। Usually in Vaikuntha, it is the bliss of Dasya Rasa with Vishnu. आमतौर पे वैकुंठ में जो आनंद है वो भगवान विष्णु के साथ दास्य रस का आनंद है। But in Vrindavan, we get more and more blissful relationships. परंतु वृंदावन में हमें प्राप्त होता है अधिक और अधिक आनंदमय संबंध। We get the most bliss of Krishna with Radha.
परंतु सबसे अधिक आनंद का प्राप्ति होता है जब कृष्ण राधा के साथ हैं. So Krishna very rare to attain, Radha Krishna more rare. तो कृष्ण बहुत दुर्लभ है प्राप्त करने के लिए, राधा कृष्ण उनसे भी अधिक दुर्लभ है प्राप्त करने के लिए. But it is the highest bliss. परंतु ये सबसे सर्वोच्च आनंद है. So Krishna should give that to the people. Sorry Maharaj, I could not follow. Krishna should give that bliss of Radha and Krishna to the people. तो कृष्ण को ये जो आनंद है राधा और कृष्ण का सभी लोगों में बांटना चाहिए. So he does that through Chaitanya Mahaprabhu, who's Audorja, most merciful. तो वे ये कार्य करते हैं चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो औदार्य है, सबसे अधिक कृपालु. So that is the special mercy of Chaitanya Mahaprabhu. तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है. In our prayer, we say, Lord Chaitanya is Mahavadanya, most merciful. So he's most merciful because he gives Radha and Krishna to the people of the Yuga. तो हम हमारी प्रार्थना में कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु सबसे कृपालु हैं. वे कृपालु इसलिए हैं क्योंकि वे राधा और कृष्ण को देते हैं कलयुगों के व्यक्ति को. So giving anything to people of Kali Yuga is very difficult. कलयुग के व्यक्तियों को कुछ भी दे पाना बहुत कठिन है. Because they're most unqualified. क्योंकि वे सबसे ज्यादा अयोग्य हैं. But Lord Chaitanya desires to give to the most unqualified people the highest form of rasa. परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ये फैसला करते हैं, ये उनकी इच्छा है कि वे सबसे अयोग्य व्यक्तियों को सबसे उच्चतम रस का रूप प्रदान करना चाहते हैं. So this makes him most merciful. तो ये उन्हें बनाता है सबसे अधिक कृपालु. So to do this, Chaitanya Mahaprabhu does something very special. तो ये करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कुछ बहुत ही विशेष कार्य करते हैं. He cannot appear as the Supreme Lord because in Kali Yuga there should not be an avatar. 3 yugas, and the Lord appears in 3 yugas. In the 4th yuga, Kali Yuga, he should not make his appearance. तो क्योंकि वे भगवान की तरह नहीं प्रकट हो सकते, क्योंकि कलयुग में कोई अवतार नहीं होता. भगवान 3 युगों में प्रकट होते हैं, परंतु कलयुग में वो कोई अवतार नहीं प्रकट कर सकते. So usually the avatar in Kali Yuga is a jiva, Chaktavesha. पर तो आमतौर पे कलयुग में जो अवतार होता है वो कोई जीवा होता है, शक्त्यावेश अवतार. So in 999 Kali Yugas and one day of Brahma, in Kali Yuga, we get a Shaktavesh avatar appearing who teaches Nam Sankirtan. Sorry Maharaj, in 999? Kali Yugas. तो 999 कलयुग में एक दिन ब्रह्मा के हमें एक अवतार प्रकट होता है जो संकीर्तन सिखाता है. But after Krishna, we don't have a Shaktavesh avatar, we have Krishna himself coming as Chaitanya Mahaprabhu. परंतु कृष्ण के आने के बाद हमें शक्त्यावेश अवतार नहीं आता, कृष्ण स्वयं ही आते हैं चैतन्य महाप्रभु बनके. But because the Lord is Sri Yuga, only appearing 3 times, Lord Chaitanya has to hide himself. So he doesn't act like Krishna, he acts like a devotee. तो क्योंकि भगवान त्रियुगी हैं, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को अपने आप को छुपाना पड़ता है. इसलिए वो भगवान की तरह बर्ताव नहीं करते, वो भगवान के भक्त की तरह कार्य करते हैं. Not only he acts as a devotee, he acts as the highest devotee. केवल वो एक भक्त की तरह कार्य नहीं करते, वे सबसे उच्चतम भक्त की तरह कार्य करते हैं. Who is the highest devotee? तो सबसे ऊंचा भक्त कौन है? And so the highest devotee is Radha. तो सबसे सर्वोत्तम जो भक्त हैं वो है श्रीमती राधा रानी. So Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, but he acts like Radha. He has the mood of Radha.
तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, परंतु वो कार्य करते हैं राधा की तरह, और उनको राधा की जो भाव वो है. So this is also quite suitable for Lord Chaitanya, because Lord Chaitanya is most merciful and Radharani is most merciful. तो ये भी बहुत उपयुक्त है श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु हैं और श्रीमती राधा रानी भी अत्यंत कृपालु हैं. We cannot approach Krishna directly, therefore we say Hare Krishna, Hare meaning Radha. So we approach Krishna through Radha. तो हम कृष्ण के पास सीधे ही नहीं जा सकते, इसलिए हम कहते हैं हरे कृष्णा, मतलब हम कृष्ण के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं राधा रानी के माध्यम से. So we approach Krishna, Radha and Krishna through Chaitanya Mahaprabhu, who has the mood of Radha. तो हम राधा और कृष्ण के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से, जिनके पास राधा रानी का भाव है. So because Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, but he also has the mood of Radha, he is capable of giving all the people of Kali Yuga not only Krishna, but also Radha. तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और वो राधा रानी के भाव में है, वो सक्षम है कलयुग के व्यक्तियों को केवल कृष्ण देने के लिए ही नहीं, परंतु राधा देने के लिए भी. So Chaitanya Mahaprabhu, when he comes as the Yuga avatar, so therefore he also has to propagate Nam Sankirtan. तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं, वे आते हैं युग अवतार की तरह, इसलिए उन्हें नाम संकीर्तन का भी प्रचार करते हैं. However, this Nam Sankirtan is a little different from the 999 Nam Sankirtans taking place in the other Kali Yugas of one day of Brahma. परंतु ये नाम संकीर्तन, ये उन 999 नाम संकीर्तनों से अलग है जो अलग कलयुगों में ब्रह्मा के दिन में जिनका प्रचार किया जाता है. So unlike other Kali Yugas, in this Yuga, Lord Chaitanya teaches the name of Krishna, who appeared in the previous Dwapara Yuga. तो और अलग कलयुगों से अलग ये बात है कि इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु कृष्ण नाम के बारे में सिखाते हैं जो उसी कलयुग के पहले आए थे. However, Chaitanya Mahaprabhu also wants to present Radharani. So therefore, in the Nam Sankirtan, we get not only Krishna, we also get Radha. परंतु इसके साथ साथ चैतन्य महाप्रभु राधा रानी को भी प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसलिए नाम संकीर्तन में हमें केवल कृष्ण ही नहीं मिलते हैं, हमें साथ में राधा भी मिलती हैं. So therefore, Chaitanya Mahaprabhu encouraged everybody to chant Hare Krishna. इसलिए चैतन्य महाप्रभु सबको प्रोत्साहित करते हैं हरे कृष्ण जप करने के लिए. So of course, Krishna means Krishna. तो बेशक कृष्ण का अर्थ है कृष्ण, But Hare means Radha. परंतु हरे का अर्थ है राधा. So with Hare, we call out to Radha. तो हरे के साथ हम पुकारते हैं राधा को. If we get Radha's mercy, then we can approach Krishna and say Krishna and get Krishna's mercy. तो अगर हमें राधा की कृपा प्राप्त हो सकी तो हम कृष्ण के पास जा सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं और कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं. So this Hare Krishna mantra is very powerful because it has the names of Radha and Krishna. तो ये हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही शक्तिशाली है क्योंकि इसमें राधा और कृष्ण दोनों के नाम हैं. Of all the different forms of activities in Bhakti Yoga, Kirtan is considered to be the most powerful. तो भक्ति योग की विभिन्न प्रकार के कार्यों में जो सबसे शक्तिशाली माना जाता है वो है कीर्तन. All the different activities we do, like hearing, chanting, and remembering, etc., will gradually give us realization of Krishna. तो जो भी विभिन्न प्रकार के कार्य हम करते हैं, जैसे कि श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वे हमें आहिस्ता आहिस्ता कृष्ण का स्मरण और उनका अनुभव करने में सहायता करेगा. However, Nam Sankirtan is the most powerful means. फिर भी नाम संकीर्तन
ये सबसे अधिक शक्तिशाली साधन है। If one chants the names of Radha and Krishna, very quickly Radha and Krishna become merciful to them. अगर कोई राधा और कृष्ण का नाम जप करता है तो बहुत जल्दी से ही राधा और कृष्ण उसको अपनी कृपा देते हैं। So the speciality of this is that it is not secret. तो इसकी खासियत विशेषता ये है कि इसे कोई रहस्य की तरह या गुप्त नहीं रखा गया है। Though it is very powerful, we don't have to keep it secret. तो हालांकि ये बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हमें इस बात को गुप्त नहीं रखना चाहिए। So everybody is allowed to hear and chant the name of Krishna. तो सभी को अनुमति दी गई है कृष्ण का नाम जपने और सुनने के लिए। So this is very suitable for Kali Yuga, where nobody is qualified. तो ये बहुत ही उपयुक्त है कलयुग के लिए, जहां पर कोई भी योग्य नहीं है। Everyone can hear the name of Krishna. हर कोई कृष्ण का नाम सुन सकता है। And in this way, everyone can get purified and advance in devotion. तो इस तरीके से हर कोई शुद्ध हो सकता है और भक्ति में प्रगति कर सकता है। For this reason, Nam Sankirtan is the Yuga Dharma. इस कारण के लिए नाम संकीर्तन युग धर्म है। But the speciality of Lord Chaitanya's introducing Hare Krishna is that it's not only Krishna, it is also Radha. तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेषता ये है कि वो केवल नाम में कृष्ण ही नहीं, राधा भी है हरे कृष्ण में। So by chanting the Hare Krishna mantra, everyone gets realization of Radha and Krishna. तो हरे कृष्ण का नाम जप करते सभी को साक्षात्कार होता है राधा और कृष्ण का। So as I said previously, that was Lord Chaitanya's mission, to give Radha and Krishna, which is highest realization, to everyone. तो जैसे मैंने पहले कहा, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का लक्ष्य था कि वो राधा कृष्ण सबको दें, जो सबसे उच्चतम साक्षात्कार है। So he does that through introducing Nam Sankirtan movement. तो वे ये करते हैं इस नाम संकीर्तन आंदोलन को शुरू करके। So we should understand that this Sankirtan movement is very special. तो हमें ये समझना चाहिए कि ये संकीर्तन आंदोलन बहुत विशेष है। It gives us the highest realization of Radha and Krishna. तो ये हमें सबसे उच्चतम अनुभव साक्षात्कार देता है राधा और कृष्ण का। And through this we can get the highest possible bliss. और इसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं जो सबसे उच्चतम आनंद है। So this is something that the Devatas and Brahma and Shiva cannot attain. तो ये वो है जो देवता, ब्रह्मा और शिव भी नहीं प्राप्त कर सकते। But it is available to the devotees of Chaitanya Mahaprabhu. परंतु ये उपलब्ध है चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के लिए। So after Chaitanya Mahaprabhu, of course, he disappeared, and then his followers began to spread the Nam Sankirtan movement. तो चैतन्य महाप्रभु का यहाँ से चले जाने के बाद जो उनके अनुयायी हैं, वो नाम संकीर्तन आंदोलन को फैलाने लगे। So it spread throughout Bengal, Bangladesh, and Orissa. तो इसे फैलाया गया पूरे बंगाल, बांग्लादेश और उड़ीसा में। And also in Vrindavan. और वृंदावन में भी। But for many hundreds of years, it didn't go beyond that. परंतु कई 100 सालों तक ये इससे आगे नहीं गया। But Chaitanya Mahaprabhu desired that the whole world should be chanting Hare Krishna. परंतु चैतन्य महाप्रभु की ये इच्छा थी कि पूरा विश्व हरे कृष्णा जप करना चाहिए। So Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, they realized that not enough had been done to spread Nam Sankirtan.
तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस बात का अनुभव किया कि और कार्य करना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है इसे फैलाने के लिए. So they began preaching vigorously, and they spread the Kirtan movement throughout India. तो बहुत जोरों से प्रचार करने लगे और इसको भारत में फैलाने लगे. And Srila Prabhupada, who took up the mission of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, then he had the ambition to spread the mantra and Sankirtan beyond India. और शिला प्रभुपाद जिन्होंने शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये लक्ष्य उठाया, उनको ये इच्छा थी कि वे इसे फैलाएं भारत से भी बाहर. So by his mercy, all the people and all the continents of the world are able to hear and chant Hare Krishna today. तो उनकी कृपा से इस पूरे विश्व के सभी महाद्वीपों में जो निवास करते हैं, वे आज हरे कृष्ण महामंत्र को बोल सक रहे हैं और सुन सक रहे हैं. So we should feel very lucky that we are able to contact the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and Srila Prabhupada. तो हमें बहुत ही भाग्यशाली महसूस करना चाहिए कि हम चैतन्य महाप्रभु और शिला प्रभुपाद जी की कृपा से संपर्क में आ सके. So by their mercy, we are able to attain the highest treasure in the spiritual world. तो उनकी कृपा से हम प्राप्त कर सकते हैं सबसे उच्चतम खजाना आध्यात्मिक जगत का. Hare Krishna. हरे कृष्णा. So if anybody would like to post your questions on the forum, please do. Otherwise, I would request Hari Gopal Prabhu and Jayagovan Prabhu to post the first few questions for Maharaj. And some people can unmute yourself to ask some questions. We'll have Maharaj with us for the next 10-15 minutes. If I might ask one question, Maharaj. You mentioned that it is very special that Sri Chaitanya Mahaprabhu introduced Srimati Radharani in the Nama Sankirtan. Does it mean that the Nama Sankirtan in the other Kali Yugas did not have Radha's name, and it is what was the Mahamantra or the Nama Sankirtan during those other Kali Yugas? तो प्रभु जी का ये प्रश्न है महाराज से कि महाराज जी, आपने कथा के दौरान कहा कि श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेषता ये रही कि उन्होंने नाम संकीर्तन में श्रीमती राधा रानी का भी परिचय किया. तो इसका क्या अर्थ है, जो अन्य कलयुगों में नाम संकीर्तन होता था उसमें श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं होता था, तो उन युगों में जो महामंत्र था वो क्या था? So usually the Yuga avatar just does propagates kirtan. So it's kirtan of the Supreme Lord, not even of Krishna. तो आम तौर पे जो युग अवतार है वो कीर्तन का प्रचार करता है, भगवान के नाम के कीर्तन का, वो तो कृष्ण का नाम भी नहीं होता. The Nam Sankirtan simply refers to the fact we chant the name of the Lord, Krishna, Achyuta, Govinda, Purushottama, whatever. We just call the names of the Lord. That's Kirtan. तो नाम संकीर्तन का अर्थ ये होता है, हम केवल कृष्ण के नामों का जप करते हैं, कृष्ण, अच्युत, पुरुषोत्तम इत्यादि, ये कृष्ण के विभिन्न नामों का जप, इसे नाम संकीर्तन कहते हैं. So because in other previous yugas, Krishna had not appeared, generally they're not chanting Krishna's name. Sorry Maharaj, can you please say again? Because previous yugas, Krishna had not yet appeared. Okay. तो क्योंकि पहले के युग में कृष्ण अभी तक प्रकट नहीं हुए थे, तो उनके नाम के ज्यादा जप नहीं होता था. Raj, you also mentioned about Chaitanya Mahaprabhu's followers, like the Gaudiya Acharyas. They spread the holy name across the world. Do they also carry on with the same mission during the other yugas that follow the seventh cycle, in taking the same Hare Krishna Mahamantra to the other yugas, or it just stops during that yuga alone? तो महाराज, आपने कहा कि चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी ये भगवान के नाम का प्रचार पूरे विश्व भर में करते हैं, तो क्या ये इसी सातवें चक्र जो युगों का चक्र है उस तक रुक जाता है, या ये और भी आगे के कलयुगों में किया जाता है?
Well, there's not any real mention of what happens in the next Yuga cycle or the next Manvantara period, but I would assume that the Yuga avatars keep appearing within each cycle. So in that cycle, then, in the Satyuga avatars period, they encourage meditation on Vishnu or whatever like that. So, and then in Kali Yuga, the kirtan of Vishnu's form, etc. Basically, it's the four types of sadhana continue to be encouraged using different forms of Vishnu. तो महाराज कह रहे हैं इस बात का विशेषता से कहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है कि ये युग चक्र जो मनवंतर के बाद आता है उसमें क्या होता है, परंतु मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो युग अवतार है हर 4 युगों के जो चक्र है उसमें आता है, और वही सतयुग में जो अवतार है वो ध्यान के विषय में कहता है, और कलयुग में जो विष्णु के दूसरे रूप के नाम के विषय में कहता है। तो इस तरीके से जो उस युग की साधना होती है, उस युग की साधना को व्यक्तियों को करने को प्रोत्साहित किया जाता है। Maharaj, please accept my humble obeisances. Thank you for the wonderful class. Maharaj, I have a question. Like Krishna, whenever he descends, he never leaves Vrindavan. Vrindavan parityajyam padamekam agacchati. How do we understand when Lord Chaitanya appeared? He appeared in Gaur Mandal. How can we understand this fact, Maharaj? तो यहाँ पर You're saying he should appear in Vrindavan. Is that what you're saying? Yes, Maharaj. Well, he's a different form because he's coming in a hidden form. So therefore, he's not displaying pastimes like Krishna. So therefore, it's not suitable for Vrindavan, except when he comes as a devotee to Vrindavan. So therefore, he can be born somewhere else. तो यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि महाराज हमने ये सुना है कि जब कृष्णा यहाँ पर आते हैं तो वे वृंदावन को कभी नहीं छोड़ते, तो हम इस बात को कैसे समझें कि चैतन्य महाप्रभु गौर मंडल में प्रकट हुए हैं? तो महाराज कहते हैं तो आप क्या कहना चाह रहे हो, इसका मतलब कि उन्हें वृंदावन में ही जन्म लेना चाहिए? नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि वो एक छन्न अवतार है, वो छुपे हुए हैं, तो इसलिए वो कृष्ण की तरह लीलाएं नहीं कर रहे हैं जो कृष्ण वृंदावन में करते हैं। केवल वे तब ही वृंदावन आते हैं जब वो एक भक्त की तरह वृंदावन में आते हैं, इसलिए ये बात सही है कि उनका जन्म कोई अन्य स्थान में हुआ। Just as Krishna appears in Vrindavan, and actually Vrindavan is his eternal Dhamma, so Chaitanya Mahaprabhu is not different from Krishna, appears in Navadvip, and Navadvip was also an eternal Dhamma. तो महाराज कह रहे हैं जैसे कृष्ण जब यहाँ पर हमारे बीच में प्रकट होते हैं वे वृंदावन धाम में आते हैं, और वृंदावन ही उनका अनंत धाम है जहाँ पर वो रहते हैं, और उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण से अभिन्न है और वे नवद्वीप में प्रकट होते हैं, और नवद्वीप भी उनका सनातन धाम है। Hare Krishna Maharaj ji, can I ask you a question? Yeah. Thank you very much. Hare Krishna. Now in Hare Krishna, as you guided us, Hare denotes Radha. In Hare Rama, what Hare denotes, Maharaj ji? तो प्रभु का यहाँ प्रश्न है कि महाराज जैसे आपने कथा में कहा कि हरे कृष्ण में हरे संबोधित करता है राधा, तो हरे रामा में हरे संबोधित क्या करता है? Rama means the one who gives enjoyment to Radha. तो रामा का अर्थ है वो जो आनंद प्रदान करता है राधा को। In other words, Rama is another name for Krishna. तो इसका मतलब ये हुआ कि राम कृष्ण का एक और नाम है। Therefore, the Hare with Rama is also Radha. तो हरे जो राम के साथ आता है वो भी राधा ही है।
Thank you, Maharaj ji. Thank you. Hare Krishna. Any other questions from the others? There's one question here in the chat, even though it's slightly away from the topic. Maharaj, if we are not able to break Dwadasi fast and given Parana time, please suggest what should we do? तो यहाँ पर एक प्रश्न है जो आज के विषय से थोड़ा हटकर है, परंतु प्रश्न ये है कि महाराज अगर हम द्वादशी के निर्धारित समय पे पारण नहीं कर सकते तो कृपया बताइए हमें क्या करना चाहिए. Well, we'll do it whenever we can. Break it whenever we can. तो आप तब अपना व्रत तोड़िए जब भी आप तोड़ सकते हैं. So we have rules, but it's not always possible to exactly follow the rules, but we follow as much as we can. तो हमारे पास नियम है, हमेशा ये संभव नहीं है नियमों का एकदम बराबर से पालन करना, तो जितना हम कर सकते हैं उतना पालन करना चाहिए. And if we cannot follow them, we just pray to Krishna. और अगर हम इसका सही से पालन नहीं कर सकते तो हमें कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए. So Maharaj, there are a couple of questions. Yeah, sorry, I hope I didn't interrupt you. Can I ask another question, Maharaj ji? Yeah. Yes, Dr. Ji, go ahead. Thank you very much. Hare Krishna. I just want to know what is the place of Meera in Hare Krishna's life. As Radha is what you explained, so Meera has also been devotee of who's Meera? I don't know. About Meera. I just want to know from you, Maharaj. Yes, Maharaj, is inquiring about Meera in relation to how do we perceive her. Yes. So generally we don't speak about her. She's not within our sampradaya. तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि महाराज जैसे आपने श्रीमती राधा रानी का स्थान बताया हमें इस हरे कृष्णा मंत्र में, तो मैं जानना चाहता हूँ मीरा जी का क्या स्थान है, उनको कैसे समझा जाए. तो महाराज ने ये उत्तर दिया कि आम तौर पर हम मीरा के विषय में बात नहीं करते क्यों वो हमारे संप्रदाय में नहीं है. And we also don't know what sampradaya she was with, so it's difficult to place her. और हम ये भी नहीं जानते कि वे कौन सी संप्रदाय से थी, तो इसलिए उनकी स्थिति उनके विषय में कह पाना कठिन है. Thank you, Maharaj. Thanks a million. Thank Maharaj, there are a couple of questions in the YouTube that I'll pick up on. One, Krishna has already decided that he will come as Chaitanya Mahaprabhu in the mood of Srimati Radharani. And when the Lord comes, all his associate also comes. Accordingly, Lord Shiva came as Advaita Acharya. Then why is it said that Chaitanya Mahaprabhu came because of Advaita Acharya worshipping the Shaligram? तो ये YouTube से एक प्रश्न है जो प्रभु जी ने पूछा कि महाराज कृष्ण ने पहले ही फैसला कर लिया होता है, ये तय कर लिया होता है कि वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर. तो भगवान ने पहले ही ये फैसला किया है, तो उनके अनुयायियों का भी फैसला होता है कि शिव जी अद्वैत आचार्य की तरह भी आएंगे. तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि अद्वैत आचार्य की प्रार्थना के कारण से चैतन्य महाप्रभु आए? We have two types of causes for appearance. हमारे पास दो प्रकार के कारण हैं भगवान के प्राकट्य के. For instance, when Krishna appeared, the immediate cause was Brahma complained to Vishnu, come to us causing problems. तो जैसे कि जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो उसका तुरंत कारण ये था कि ब्रह्मा ने विष्णु से प्रार्थना की क्योंकि कंस बहुत समस्या खड़े किए हुआ था. But the higher reason that why Krishna appears because he wants to satisfy his devotees. परंतु इससे ऊंचा जो कारण है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे समक्ष आए, वे अपने भक्तों को संतुष्ट करना चाहते थे. So the immediate cause of Krishna Chaitanya Mahaprabhu appearing is that Advaita Acharya called out to deliver the people of Kali Yuga because he saw that the people of Navadvip were all corrupted. तो जो
तत्कालीन कारण है श्री चैतन्य महाप्रभु के आने का, वो ये था कि अद्वैत आचार्य ने उन्हें पुकारा कि जो कलयुग के निवासी हैं उनका उद्धार किया जाए, क्योंकि वे देख रहे थे कि नवद्वीप में जो रहने वाले थे वे काफी भ्रष्ट हो चुके थे। Said in Padma Purana that by offering tulsi leaves and water to Shalagram Shila, then you can purchase the world. तो पद्म पुराण में ऐसे कहा गया है कि भगवान को तुलसी का पत्ता और जल चढ़ा के हम भगवान को खरीद सकते हैं। So in this way, Advaita Acharya was the immediate cause of calling Chaitanya Mahaprabhu. तो इस प्रकार से अद्वैत आचार्य तत्कालीन कारण थे चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पर बुलाने के लिए। But then we have the other cause, the internal, esoteric. परंतु इसके अलावा हमारे पास आंतरिक कारण है भगवान के आने का। And one of those causes is that Krishna wanted to understand the greatness of Radha's love. और ये इनमें से एक कारण ये है कि कृष्णा जो श्रीमती राधा रानी का प्रेम है उनके लिए, उसकी महानता समझना चाहते थे। He wanted to understand, or he wanted to experience the bliss that Radha experienced. वे इस आनंद का अनुभव करना चाहते थे जो श्रीमती राधा रानी अनुभव करती हैं। And he wanted to experience what qualities does Radha experience Krishna that makes her so attractive. What is it in Krishna that's so attractive? So then he took the role of Radha to experience it. और यहाँ पर कृष्ण उस बात का अनुभव करना चाहते थे कि कृष्ण में मुझ में क्या गुण है कि राधा रानी मुझसे आकर्षित होती है, वो इन गुणों का अनुभव करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राधा रानी का रूप की भावना ली। Thank you, Maharaj. There's one more question here. This is from Vasant. And Vasant says, if Krishna comes only one time in a day of Brahma, in each Dwapara Yuga, who appears to give instructions to the Pandavas and Arjuna, and who instructed Bhagavad Gita in each Dwapara Yuga, as in one day of Brahma, there are 1,000 times Dwapara Yuga comes. Well, there's a Dwapara Yuga, but the Pandavas only appear when Krishna appears. तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया है महाराज से, ये वसंत जी ने पूछा है कि कृष्ण, महाराज जी, कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में केवल अगर एक बार आते हैं, तो जो और अन्य द्वापर युग हैं, क्योंकि ब्रह्मा के दिन में और 1000 कुल मिला के द्वापर युग होते हैं, तो उन द्वापर युगों में कौन पांडवों को उपदेश देता है, कौन भगवत गीता का प्रचार करता है? तो महाराज ने कहा कि जब कृष्ण आते हैं, जब एक बार ब्रह्मा के दिन में, तो उसी समय केवल पांडव आते हैं उनके साथ। So in other Dwapara Yugas, there's no Krishna, there's no Pandavas. तो जो बाकी और द्वापर युग हैं, उनमें कृष्ण नहीं है, पांडव भी नहीं है। They're actually eternal associates of Krishna. वास्तव में वो भगवान के अनंत सनातन सहयोगी हैं। So in each yuga and each Dwapara Yuga, sorry Maharaj, there's a supplementary question from my side. There are, in each of these yugas, we have these different incarnations. And as you say, because Krishna appears only in one day of Brahma, one time in a day of Brahma, we have been always in the sort of an opinion that he's there in every Dwapara Yuga or every other yuga, the other incarnations come. So you're saying that can only be occasional then? Yeah, once in a day Brahma, Krishna appears. Chaitanya appears. Pandavas appear. तो यहाँ श्री वल्लभ प्रभु जी ने इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए पूछा है। तो महाराज, इसका अर्थ यह है कि हम तो ये पहले सोचते थे कि कृष्ण हर द्वापर युग में आते हैं और अलग युगों में भगवान के और अवतार आते हैं, परंतु आज सुनने के बाद ये पता पड़ा कि ये बस प्रासंगिक है। तो महाराज कहते हैं, हाँ, जो कृष्ण और पांडव हैं
वो ब्रह्मा के केवल पूरे दिन में एक ही बार आते हैं. Which means we also only get one Bhagavad Gita and one day of Brahma. तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें ब्रह्मा के एक दिन में केवल एक बार ही भगवत गीता प्राप्त होती है. Is that also? Associated question: the sequence of the yuga or Satya, Dwapara, Treta, and Kali. Why is there a difference this time? Jagwan, you may want to add and expand if you want. Well, the sequence is Satya, Treta, Dwapara, Kali. And Krishna appears in Dwapara Yuga, Chaitanya in the Kali Yuga, and a Rakta form appears in Treta Yuga, and Sukla form appears in Satya Yuga. That's the general order. तो महाराज यहाँ कह रहे हैं, तो श्री वल्लभ प्रभु जी ने पूछा इसका अनुक्रम हम कैसे समझें, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग का. तो महाराज ने बताया कि इसका सही अनुक्रम इस प्रकार है कि पहले सत्य युग आता है, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग. तो कृष्णा द्वापर युग में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु कलयुग में, रक्त अवतार आते हैं त्रेता युग में. महाराज सॉरी, आई मिस द सतयुग अवतार. शुक्ल जो सफेद रंग के अवतार, वे आते हैं सतयुग में. The yugas are proportionate: 4 parts, 3 parts, 2 parts, 1 part. So if you look at the number of years, it's 4 Kali Yuga times 2 is Dwapara Yuga times 3 is Treta Yuga times 4 is Satya Yuga. तो ये जो युग हैं, ये इन बिल्कुल अनुपात में चलते हैं, 4 भाग, 3 भाग, 2 भाग, 1 भाग. तो अगर हम देखेंगे पहले कलयुग है, फिर उसका 2 भाग है द्वापर युग, फिर उसका 3 भाग है त्रेता युग और 4 भाग है सत्य युग. There's one more question from Purushottam Prasad Prabhu, all the way from Krishna Kathadesh. What is the endeavor that sadhaka should take to get greediness to chant holy names uninterruptedly? Pranams at your lotus feet. तो यहाँ पर तो यहाँ पर एक प्रश्न है पुरुषोत्तम प्रसाद प्रभु का सीधे कृष्ण कथा देश से कि महाराज हमें क्या करना चाहिए कि हम भगवान के पवित्र नामों का निरंतर रूप से बिना रोके हुए जप कर सकें, ऐसी लालसा कैसे प्राप्त हो? If we follow the process of bhakti properly, and we also hear about from the Bhagavatam the great devotion of the people of Vrindavan, then we can develop that greed. तो अगर हम भक्ति के सारे जो प्रक्रिया हैं उसका पालन करें और श्रीमद् भागवतम से सुने जो महान भक्त हैं भगवान के, जो उनकी जो भक्ति है जो वृंदावन निवासियों की, फिर हम उस प्रकार की लालसा विकसित कर सकते हैं. Seva Padma Mataji, over to you. Hare Krishna Maharaj, Dandat Pranam. Very nice class, Maharaj. So in Dwapar Yuga and other ages, like what is the principle? How, if there is no Bhagavad Gita, there is no Pando. So what is the special pastime of Krishna in other Dwapar Yuga? He does not even appear as a Braj Krishna. So what is the pastime of Krishna in the other Dwapar Yuga, Maharaj? He's not there. The other forms of the Lord are there. So he's in the Vishnu form in that? Yeah. He's a red form, a white form, except a black form. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. तो सेवा पद्मा माता जी का यहाँ प्रश्न था कि हरे कृष्ण महाराज, बहुत ही अच्छा कथा. तो अगर आपने जैसे बताया कि केवल एक ही द्वापर युग में कृष्ण प्रकट होते हैं, तो जो बाकी के द्वापर युग हैं उनमें क्या विशेष लीलाएं होती हैं? तो क्योंकि उस द्वापर युग में तो कृष्ण व्रज कृष्ण नहीं आते, तो क्या लीलाएं होती हैं? तो महाराज ने कहा हाँ, वहां कृष्ण की कोई लीला नहीं होती क्योंकि कृष्ण ही नहीं आते. फिर माता जी ने पूछा तो क्या इसका अर्थ है कि वहां विष्णु रूप आते हैं? तो महाराज ने कहा हाँ, अलग प्रकार के रूप आते हैं, जैसे कि रक्त रूप, फिर शुक्ल रूप, फिर जो काले रंग का रूप, इस प्रकार इत्यादि.
Maharaj, there are a few more questions. I'm going to make it a little rapid fire if possible. What is the difference between Krishna and Krishna avatar? Champaklata Devi Das Mataji, and again she says, what is the difference between Krishna Swayam and Krishna avatar? तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं. श्री वल्लभ प्रभु ने कहा मैं तेज अग्नि की तरह अब एक के बाद एक प्रश्न पूछूंगा. तो पहला प्रश्न ये है कि कृष्ण और कृष्ण के अवतार में क्या अंतर है, और फिर वो पूछती हैं कि कृष्ण स्वयं और कृष्ण अवतार में क्या अंतर है. ये चंपकलता माता जी का प्रश्न है. So the word avatar is often used to mean when the Lord descends into the material world. तो अवतार शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब भगवान इस भौतिक जगत में नीचे उतरते हैं. So therefore we could say Krishna is an avatar because he appears in the material world. तो हम कह सकते हैं कि कृष्ण अवतार है क्योंकि वो भौतिक जगत में प्रकट होते हैं. However, because all the avatars appear from Garbhodakshay Vishnu, then we may also think Krishna also appears from Garbhodakshay Vishnu. So he's an expansion from Garbhodakshay Vishnu. Not correct. तो क्योंकि जो सब अवतार प्रकट होते हैं वो गर्भोदक्षय विष्णु से प्रकट होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कृष्ण भी गर्भोदक्षय विष्णु के ही एक विस्तार हैं, परंतु ये बात सत्य नहीं है. So actually Garbhodakshay Vishnu comes from Mahavishnu. Mahavishnu comes from Vishnu for Sankarshan in the spiritual world, and Sankarshan is an expansion of Balaram, Balaram is an expansion of Krishna. So ultimately Krishna comes before all the Vishnu forms. तो वास्तव में गर्भोदक्षय विष्णु महाविष्णु से आते हैं. महाविष्णु जो एक आध्यात्मिक जगत में है संकर्षण, उनसे आते हैं. संकर्षण बलराम से आते हैं और बलराम कृष्ण से आते हैं. तो कृष्ण इन सभी विष्णुओं से पहले प्रकट होते हैं. So to distinguish him, we call him Avatari, the source of all the avatars. तो इसलिए कृष्ण को यहाँ पर इनसे भेद करने के लिए हम उन्हें अवतारी कहते हैं, मतलब सभी Hare अवतारों Krishna. का स्रोत. Any chance I have another quick question? Mm-hmm. Yeah. Question. Shivala Prabhu, you're on mute. Sorry, there are a few questions, Maharaj. I'll just take one question from Govindananda Prabhu. He says, Chaitanya Mahaprabhu has said, Kayate soete yatha tatha nam loe. In sleeping, how can we meditate on the holy names? Please advise. Well, probably if you're very advanced, you can do that. तो गोविंदानंद प्रभु जी का ये प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा खाए ते सोए ते यथा तथा नाम लोए. तो सोते समय हम कैसे भगवान के नाम पर ध्यान रख सकते हैं? तो महाराज ने कहा अगर आप बहुत उत्तम श्रेणी के भक्त हैं, आप बहुत प्रगति कर चुके हैं, तो आप ये कर सकते हैं. So even when you're dreaming of Krishna. तो जब आप स्वप्न देखते हैं उस समय आप कृष्ण संबंधित स्वप्न देखते हैं. Maharaj, there's one other question from Hamsa Gokul Prabhu. Chaitanya Charitamrita Adi Leela 3.26 states, my plenary portions can establish the principles of religion for each age. No one but me, however, can bestow the kind, loving service performed by the residents of Raja. Does this mean that in the other Divya Yugas, even worshipping devotees, even of Supreme Lord, cannot reach Goloka? Yeah. तो यहाँ पर हमसा गोकुल प्रभु का ये प्रश्न है कि चैतन्य चरितामृत की आदि लीला 3:26 में भगवान कहते हैं कि मेरे जो विभाजन है वे धर्म का सिद्धांत हर युग में स्थापित कर सकते हैं. कोई और नहीं, परंतु मैं केवल इस प्रकार की जो प्रेममयी सेवा है जो व्रजवासी करते हैं वो केवल मैं ही दे सकता हूँ. तो क्या इसका ये अर्थ है कि जो अन्य अवतार हैं वो हमें व्रज तक नहीं पहुंचा सकते? Only way we can reach Krishna is if we know about Krishna and we hear the pastimes of Krishna and Vrindavan. Then we develop that sort of attraction. Then we can go to Krishna. तो महाराज कह रहे हैं हम कृष्ण के पास तभी जा सकते हैं जब हम कृष्ण को उसके कृष्ण के विषय में जानते हैं और कृष्ण की जो वृंदावन लीलाएं हैं हम उन्हें सुनते हैं, फिर हम उस प्रकार का स्नेह भगवान के लिए प्राप्त कर सकते हैं और वहां जा सकते हैं.
This would be the last question for Maharaj today, and I request Lalit Daulat Ramani Prabhu, who wanted to say something, please unmute, ask. Hare Krishna Prabhu. My question is that as we have read in Bhagavad Gita, the soul cannot be affected by fire, water, air, anything. Then how is it that it is said that after death we go to hell and heaven for getting punishment or the fruits of our this thing, when the soul cannot be affected by anything? This is my question. तो यहाँ पर श्री ललित दौलत रमानी प्रभु का ये प्रश्न है कि महाराज, हमने भगवत गीता में सुना है कि जो आत्मा है उसे अग्नि, जल, वायु, उससे कोई भी छू नहीं सकता, तो फिर ये कैसे कहा जाता है कि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद नरक या स्वर्ग जाती है और फिर वहां उसे दंडित किया जाता है? ये मेरा प्रश्न है. If you go to hell, you still have a body. It's not like this body, but it's a subtle body that you can suffer in that body. तो महाराज कह रहे हैं अगर आप नरक भी जाएंगे तो आपके पास एक शरीर होता है, वो ऐसा शरीर नहीं होता है, एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें आप भुगत सकते हैं. So that body can burn or get pierced or whatever, but the soul never gets pierced or burned. तो वो जो शरीर है वो जल सकता है, उसे कष्ट हो सकता है, परंतु वो आध्यात्मिक नहीं है. Maharaj, I would like to thank you on behalf of everybody here for being here with us, explaining to us about the wonderful appearance of Lord Chaitanya, the tattva behind it, and you also were kind enough to take so many questions. We look forward to more sessions now that you're in a more time-friendly zone to us back in Chennai, away from Australia now, and we look forward to your association as soon as this lockdown goes. Maharaj, just one last particular question from me. I know that you're also an expert from the astrological sides and the like. So this corona is still coming up again. Any particular reading and predictions that you have on that front? Well, it should last another year. At the same intensity, Maharaj? Maybe a little less as time goes on. Okay. Anand Kishore, you want to just... Yeah. तो श्री वल्लभ प्रभु महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं. आपने आके हमारे बीच में हमें चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के विषय में समझाया, तत्व ज्ञान समझाया, और आप बहुत कृपालु रहे, इतने सारे प्रश्नों का उत्तर भी दिया. और शायद हम आपसे आप अधिक सुनेंगे क्योंकि आप समय के अनुकूल क्षेत्र में हैं, ऑस्ट्रेलिया से चेन्नई आ गए हैं. तो अब मैं एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा मेरे द्वारा कि मैंने ये भी सुना है कि आप ज्योतिष विज्ञान में काफी दक्ष हैं. तो आपका क्या कोई भविष्यवाणी है इस विशेष जो अब महामारी चल रहा है, ये कितने समय तक चलेगी, इस विषय में कुछ ज्योतिष से भविष्यवाणी है? तो महाराज ने कहा हाँ, शायद ये लगभग 1 साल और चलेगी. तो श्री वल्लभ प्रभु ने पूछा क्या इतनी ही तीव्रता से? तो महाराज ने कहा नहीं, तीव्रता थोड़ी कम होते जाएगी जब समय बीतता जाएगा. Maharaj, any other comment from you? No. Maharaj, thank you very, very much for being here with us today. And I thank all the other devotees for your amazing questions. Maharaj, I will make a few announcements for the rest of the day's programs, and I think I may not want to hold you for this time. As Harigopal Prabhu was initially saying, there are so many amazing books of the Vaishnava Acharyas that Maharaj has made. So we will try and see that all the links for all of those which are online are available to every one of you. We will also try and get some of those books at least so that you can have hard copies. And we all look forward to serving Maharaj personally. We don't want to wait for one more year to have you here, Maharaj, but then we look forward to serving you here when you come to be here with us in Damodar very soon. Thank you. Thank you, Maharaj. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaura Premanande. Hari Hari Bol. Kuch major announcements. Thank you all. Very interesting questions that you all asked. And I saw a lot of people participating today, both on YouTube and here we have close to 250 people participating. Very nice. I want to see much more
I want every one of you to take that responsibility to reach out to a larger and larger audience to try and bring them on, because we have opportunity to listen to wonderful devotees from around the world who are all, serving Srila Prabhupada's movement so very wonderfully. So kindly pick it up and encourage everybody, every one of you, join in and encourage as many people as possible to join in this particular session. So having said that, I would like to also mention that we have very special programs for Gaura Purnima. This morning we started off with a bang with His Holiness Bhanu Swami Maharaj. But this evening, sharp at 6 o'clock, I want you to be here at 5:45. We will start a kirtan. 6 o'clock, we will have a session with His Grace Amarendra Prabhu, who is also an amazing speaker. The session with Amarendra Prabhu is likely to go on from 6 until 7:45 or 8. It will be a 2-hour session. So we will have quite a lot that will be covered in that session. So I request every one of you to be present, drop all, be present with us. Tomorrow morning, Nityam Bhagavata Sevya continues. And besides that, 11 o'clock, we will start with back-to-back Kirtan sessions. 11 बजे से लेके कल सुबह शाम को 5-6 बजे तक कीर्तन होगा. 6 से 7 तक आदिवास का दर्शन होगा. Or nobody is allowed to get into 6 or 7. Wherever the Adivas function happens, the deity department will take care of who is going to be participating there. And kirtans will continue. So just be connected. There'll be a kirtan, Hare Krishna kirtan. There'll be a Gaur kirtan. And there'll be a small katha at least once in 2 hours. So we will have various topics covered. And Parson, Sunday, is the Gaur Purnima day. And on the Gaur Purnima day, everybody is requested to fast until sunrise, until moonrise, and then you can have Ekadasi Prasad. And that evening we shall have very special Abhishek for Panchatattva deities and our Gaurnitai deities. And again, it will be an online session. Nobody should ideally mingle and be together. It's better just family is there. If any of you have your own deities and you want to also do an Abhishek or showcase your deities, after your Abhishek, we can spotlight various deities. If you have bhoga that you're offering, good opportunity. Make some nice bhoga. That bhoga you can consume on the next day. So you can make even the normal non-Ekadasi prasadam as bhoga items. Make a nice bhoga offering. If you just ping us and tell us, or you have your video screen on, we'll be able to spotlight different devotees. Make sure that your name is properly specified there. So when the video comes in, we can see your altar and we can see the bhoga. Knowing that it is on the disappearance of even Sheikh Hamdan, we are not having any skits. It is a prayer session only. So let us also pray for his, his soul to have the right destination as well. We also, tomorrow's session is dedicated to His Grace Krishna Kirtan Prabhu of Bangladesh, who disappeared last week. He's an amazing Kirtaniya in the Padhyavali style that he used to, and he was there during the lockdown a few times with us online. So we look forward to also praying for him. We'll possibly have one session of a Kirtan that we'll play that he sung, and then we will have an opportunity to hear from many, many devotees tomorrow. Last year, Gaura Purnima festival, I remember the lockdown session had already started, but we had the great fortune of having His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj with us. And we took the risks to have a program with a limited audience at the residence of Mahesh Advani Prabhu. Thank you for such an amazing program. But then we had the great fortune of having the last presence of His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj in Damodar Desh. Never in the past have we had any visiting sannyasi for Gaura Purnima. And that time I was thinking, what a surprise that we have a sannyasi here. How come? Due to lockdown, Maharaj is just passing through and we had him here. It was an amazing opportunity to have him and celebrate Gaura Purnima. And Maharaj was none other than, the person empowered and authorized by Srila Prabhupada to translate the entire Chaitanya Charitamrita and all of Srila Prabhupada's writings in Bengali. And Maharaj was actually at the end of the session, he said, Sri Vallabh Prabhu, I want to tell you that I'm working on making a new movie on the life of Lord Chaitanya. And he said, this is not yet in public, but I want to tell you. And he started telling us a whole story as to how he's going to do it. He spent 20 minutes explaining how he's going to do that particular storyline and what he's going to do. And we said, Maharaj,
amazing. Your Abhay Charan was so amazing. I'm sure Gauranga, the movie that you're planning on, will also be amazing. We look forward to meeting and understanding it. I'm sure Maharaj's thought process would have been documented, and some of his disciples and all of us, it's our duty to see that that happens for the benefit of the whole world as to how they would do. And having said that, it is very unfortunate that we lost Maharaj in July. We will continue to dedicate the Gaura Purnima also for Maharaj in prayer. And this coronavirus episode is not yet gone. And I think I took the liberty to ask Maharaj the question. And as Maharaj says, please brace yourself up for more austerity, for in whatever way, whatever is there, make sure that you spend very carefully, you invest very carefully, you plan your lives very carefully. My wife was immediately identifying that I should be careful in spending, right? So we need to see how we all are frugal. Anything that you want to splash and donate should be donation for Krishna consciousness, the right way of utilizing the money. And ideally, at this particular stage, I know many devotees were also planning to travel to Mayapur, and I've requested many of them to cancel their visits. Sridham Mayapur has become a hotbed, where people congregate and there's no social distancing. It looks like Krishna will take care, Chaitanya Mahaprabhu will take care, but pandemic is hitting Sridham Mayapur also right now again. Even His Holiness Bhakti Purushottam Maharaj is having COVID since yesterday. So we seek prayers from everybody, and I request every one of you, hold, no hurry. These dhams are always there, and I'm sure you will have an opportunity to serve the dham sitting where you are, and definitely in person visiting the dham. I would want to just give the screen to Naikatma Prabhu, and I'll make you the co-host. Naikatma Prabhu, you have 2 minutes, and you can go on. And in what name are you connected? Okay, this is Nishant. Sorry, I forgot to change it. Nishant. No, forget it. It can be Nishant, but in the future, I want some sign so you are up for the topmost. And I don't see you yet as Nishant. Now you are talking, maybe you are up. Give me a minute. Yes, I see you there. I'm allowing you to quickly take on. I'm making you a co-host. You have 2 minutes. And let's close with prayers for everybody. Also, one other prayer request is we lost a very wonderful devotee and a patron of ISKCON, Mr. Gupta, the husband of Anita Gupta from the Emirates Hills, which we call the Govardhan Hills. And him and his family used to host many programs, Rath Yatra, Govardhan Puja, etc., for the high net worth individuals in Emirates Hills and various other places. And the lady also had the good fortune of visiting Sridham Mayapur a few years ago. They were, even on the 1st of January, I happened to visit them and hold a program specially, and he was there. And it unfortunate that he passed away while in Singapore. Very nice devotee, used to be initially associated in Bahrain and then in Damodar Desh, being connected by Apurva Gopika Devidasi Mataji. Let's pray for all these devotees, one large Hare Krishna please from everybody. And then we hear Naikatma Prabhu's announcement. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Before I hand over to Naikatma, every year for Gaura Purnima, we have sponsorships that we do for the festival in Mayapur. Even this year, we are funding around 2.5 lakhs for just the Annadan Prasadam for all the visiting devotees, a whole day breakfast and lunch. And so, in addition, there are so many other sevas that we do for Sridham Mayapur, the birthplace of Lord Chaitanya. Anybody who would like to contribute can be in touch with Sevananda Prabhu, or you can be in touch with us. And today there's a Shantipur festival. We also fund for the Annadan at the Shantipur festival. And so any donations for these festivals are welcome. So today, if you make khichdi and offer it to the deity, it is the best. Think about the Lord and offer it. Shantipur festival. You can, even to this evening, you can make a nice khichdi and offer it. Make it for yourself and maybe give it to somebody. Ideally, avoid all that, but at least offer it to the Lord and have khichdi. So with that note on the donation, Naikatma Prabhu, over to you.
Hare Krishna. Can you see the screen, Rohit, the poster? Yes, we are able to see it. Hare Krishna. Dandavat pranams to all the devotees. This is Gaura Purnima festival. We're just doing a small opportunity for seva for everyone to sow the seeds of bhakti. So request everyone to be a big gardener and gift Sri Chaitanya Charitamrita to your friends and relatives, or order one for yourself. So this time what you're trying to do is you can deliver in India, or you can get it delivered in your home address in Dubai, or UAE, anywhere in UAE. So for example, if English is 170 dirhams delivered in India, it will be 295 dirhams delivered in your home here. So like that, all the languages is there. We'll be sharing this flyer through the groups, and if anybody is interested, you can contact either me. I'll just put my name and number in the chat right now, or Rupanuga Prabhu, or Vidyagati Prabhu, or Shanmuganathan Prabhu. And there's an email ID is there, ebooks2gift@gmail.com. You can contact us, and then we'll call you, and then we'll help you arrange for the Lakshmi transfer, everything. But just this will be a wonderful seva, and globally everybody is doing the seva of distributing Chaitanya Charitamrita. First time we're doing Damodar Desh. So kindly think about it, and as per the capacity, you can gift to your family in India, or gift to yourself also in Dubai. Hare Krishna. Thank you very much. I'm just typing my address. And as Naikatma Prabhu mentioned, you can, I also post the link here. So any of you who may want to reach any donations to Damodar Desh or to ISKCON Mayapur, you can post that in the link that I posted above to ddy.iskonmayapur.com. Log in and you can pay in. It gets used for the services that DDY sponsors in Sridham Mayapur. Naikatma Prabhu's contact is given there. And I would also like to take the liberty of giving Sevananda Prabhu's contact. And it is 050. Naikatma, what's the number? Already shared, Prabhu. Shivala Prabhu. Shared. I posted No, in the also chat. I want Sevananda Prabhu's contact shared. That's also shared. Jagan Prabhu shared it. Yes, Sevananda Prabhu has also shared it. Okay, that's it. So kindly get on, and looking forward to seeing you all this evening at 5:45 sharp, and 6 o'clock to 8 o'clock. Block yourself for an amazing journey. It's amazing to hear His Holiness Bhanu Swami Maharaj today, and Amarendra Prabhu in the evening tomorrow. So this evening, and so tomorrow it's going to be kirtans with small katha. Thank you very, very much. Oh, one other very quick and last announcement. Last. We have brought, fortunately, many Bhagavad Gitas that are available here in physical form with us here. We did a lot of e-distribution, but we have Bhagavad Gitas available on hand. I would welcome devotees to reach out to Sevananda Prabhu or Naikatma Prabhu and Vidyagati Prabhu, Rupanuga Prabhu. And if you want to pick up 10, 20 Bhagavad Gitas for distribution, please do. Great opportunity. Books are on hand, including a lot of japa malas, japa bags. It's all available. Thank you very much. Hare Krishna. Ekam Shastram Devaki Putra Geetam. Eko Devo Devaki Putra Eva. Eko Mantra Tasya Namani Yani Karmapi Ekam Tasya Devasya Seva. Tvameva Mata Cha Pita Tvameva. Tvameva Bandhuscha Saka Tvameva. Tvameva Vidya Dravnam Tvameva. Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Krishnaya Vasudevaya Hare Paramatmane Pranata Kleshanashaya Govindaya Namo Namah. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namah. Vasudeva Sutam Devam Kamsachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Katyayani Mahamayi Mahayogini Nidishwari Nandagopa Sutam Devi Patime Kute Namah Shri Krishna Mama Dasoham Krishna Tavasmi. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Shri Gaura